Bismillahirrahmanirrahim. We have started the photocatalysis. So in this series today we discuss the kinetics of the photocatalytic reactions. A number of mechanisms have been proposed for the photocatalytic reactions. So all mechanisms involved and different mechanisms have been proposed. Different mechanisms have been reported for photocatalytic reactions. All these mechanisms involved the formation of exciton. All mechanisms involve the formation of exciton under irradiations. ये सब में कॉमन है. Exciton क्या है? Exciton is the pair of hole and electron. This is called exciton. So every mechanism involved the irradiation of the catalyst. As a result of irradiation, a positive hole and electron is excited from the valence band to the conduction band, and as a result a hole is generated in the valence band and a photo-induced electron in the conduction band. These positive holes and electrons further undergo reactions and leads to formation of OH radicals. ये तो सब में कॉमन है जितने भी mechanisms हैं. So according to a recent report, in International Journal of Chemical Kinetics, ये 220 का ही है, 220 का यानी इसी साल का है. They have proposed two type of mechanisms for photocatalytic reactions. Proposed two types of mechanisms and kinetics for a photocatalytic reaction. और photocatalytic reactions क्या है? ये for ZNO RGO catalyzed degradations of MB, यानी मिथाइलिन ब्लू है, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं in the presence of catalyst ZNO and RGO under irradiations. It form degradation products. तो इसके लिए दो mechanisms या दो kinetics models proposed किए गए हैं. है तो बहुत से, लेकिन ये दो हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं. One is similar to Langmuir-Hensel-Wood mechanisms and the second is the radial mechanisms. यानी एक उसमें है direct mechanism, direct path, which is similar to just like a Langmuir-Hensel-Wood mechanisms, और दूसरा है indirect path, that is ER mechanisms. Langmuir-Hensel-Wood और ER mechanism पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो पहले डायरेक्ट पाथ में
according to Langmuir-Hinshelwood mechanisms, क्या होगा? According to this mechanisms, first methylene blue get absorbed at the surface of the catalyst. यानी इसमें steps क्या involve हैं? First, MB methylene blue adsorbs at the surface of the catalyst in the first step. According to direct pathway या according to Langmuir-Hinshelwood mechanisms, the reactant, which is the methylene blue, it adsorbs at the surface of the catalyst in the first step. In the second step, degradation reaction proceeds, and then degradations. डिग्रेडेशन से पहले क्या होगा? इरेडिएशंस, या अगर ऐसे कर लेते हैं, irradiations of the photocatalyst. When catalyst is irradiated, it produces a hole and electron in the valence band and conduction band. Irradiation of the photocatalyst produce hole, positive hole, and electron in valence band and conduction band respectively. The positive hole is trapped by surface defect of the catalyst. क्योंकि ये composite है, इसमें catalyst है ZNO और RgO, graphene oxide composite है, so there would be a certain crystal defects, surface defects. So the positive hole is trapped by surface defect. Positive hole is trapped by surface defects. Surface defect को इसमें हम SD से represent करते हैं. As a result, surface active center is formed. तो इससे क्या होगा? The positive hole is trapped by surface defects and it results in surface active center. SD active center, स्टार हम इसको कर लेते हैं. तो surface active center is formed as a result of reaction of the positive hole with the surface defect. So this surface active center react with methylene blue and produce an adduct species. This surface active center react with MB and produce an unstable adduct species. SD or MB species, surface adduct species is formed. This adduct species then further react and produce the degradation product. Sixth number, the surface active, the adduct species, active adduct species further react
and produce the product. According to first mechanism, which is similar to Langmuir-Hinshelwood mechanism, Langmuir-Hinshelwood mechanism क्या है कि reactants absorb होते हैं ना, so it is just like Langmuir-Hinshelwood mechanism. So first, the methylene blue adsorbed at the surface of the catalyst, and irradiation of the photocatalyst produced an exciton, a hole and electron in the valence band and conduction band respectively. Positive hole is trapped by the surface defect and it results in active center. Then this active center react with the methylene blue and produce an adduct species, and this adduct species then further react and produce the degradation product. इनको in terms of reaction में अगर हम लिखना चाहें तो पहले हम लेते हैं कैटलिस्ट एंड MB, तो क्या हो जाएगा MB adsorbed. Let K1 is the rate constant for this species, this reactions. Then catalyst, and under irradiation it produced hole and electron pair. Rate constant K2 is the rate constant for this species. Then this positive hole react with surface defect and positive hole. It produce surface active center. K3 is the rate constant for this step. And then this surface active center may decompose by reaction with electron. SD may react with electron and it decompose, or it may further react with SD star and MB adsorbed and produce SD and MB adduct species. This adduct species then decompose to product or deactivate. Yani SD and MB star, it decomposed to SD and MB M product, or it may react SD or MB star may react with oxygen electrons and deactivate. SD and MB is formed. So this is the proposed mechanism. 5, 6 and 7, these are the rate constant. तो अब इसके लिए प्रोडक्ट किस स्टेप में बन रहे हैं, स्टेप नंबर 6 में. So rate of reaction would be equal to, rate is equal to K6 and SD or MB star. This is the rate for this photocatalytic reactions. This is an unstable species. तो इसलिए स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम इस कंसंट्रेशन को स्टेबल स्पीशीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. एट स्टेडी स्टेट यानी ये अनस्टेबल है ना, तो एक स्टेट इसमें ऐसे भी आता है कि जिसमें इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स इक्वल टू इट्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. सो एट स्टेडी स्टेट और आर रेट है, एट स्टेडी स्टेट rate of formation of SDMB star becomes equal to its rate of decompositions.
तो अब ये किस किस स्टेप में बन रहे हैं? ये बन रहे हैं एक स्टेप 5 में, स्टेप 5 में बन रहे हैं, और डिकम्पोज कहां पर हो रहे हैं? 7 में। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन है K5, और यानी अगर हम इस तरह करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगा? K5 और HD स्टार एंड MB एड्सॉर्ब, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? वो है K7 और SD MB स्टार एंड E। तो अब ये दोनों बराबर होते हैं एट स्टेडी स्टेट, सो वी कैन राइट एज K5 at steady state RF is equal to RD, so K5 SD star MB adsorb becomes equal to K7 SD and E। इससे हम MB and E, इससे हम इस स्टेडी स्टेट अनस्टेबल स्पीशीज की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वो SD और MB स्टार इट विल बी इक्वल टू K5 डिवाइडेड बाय K7 और SD स्टार डिवाइडेड बाय E एंड MB एड्सॉर्ब, ये हो जाएगा ना। तो अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट में, फाइनल इक्वेशन में। सो वी गेट द रेट इक्वेशन एज R इज इक्वल टू K6, और इसकी बजाय हम ये लिख देते हैं K5 डिवाइड बाई K7 और SD स्टार डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन एंड MB एड्सॉर्ब्ड। अब यहाँ पर ये SD स्टार ये कहाँ से बना था? इट इज फाउंड बाय रिएक्शन विद होल, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब व्हेन कैटलिस्ट इज इरेडिएटेड, सो देखिए यहाँ पर ये कैटलिस्ट है ना, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, इधर आ जाता है, तो इधर पॉजिटिव होल बन जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों बराबर है। तो ये और इस होल से फिर बनते हैं SD, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और ये SD की तादाद ये बराबर है, इक्वल है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी इन सब कांस्टेंट को इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा KR और MB एड्सॉर्ब्ड। ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, where KR is the overall rate constant। अब इस MB एड्सॉर्ब फॉर्म में है, सो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एड्सॉर्ब स्पीशीज को हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स कैन बी यूज्ड। हम जिस रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें दो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स को यूज किया गया है, एक लैंगर है और दूसरा फ्रेंडलिक है। सो अकॉर्डिंग टू Langmuir adsorption isotherms, Langmuir adsorption isotherm क्या है? थीटा इज इक्वल टू, यानी ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू KR और थीटा MB एड्सॉर्ब फॉर्म में है ना, और थीटा इन द फॉर्म ऑफ Langmuir इज AC and 1 plus AC।
C is concentration and A is constant. इस केस में हम लिखना चाहें तो इसके लिए अगर हम ये लिखते हैं कि R इज इक्वल टू के आर, और इस A जो एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेट S को हम कहते हैं के एल लैंगमुयर कांस्टेंट, और MB डिवाइडेड बाय 1 प्लस के एल एंड MB। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है। इसको अगर हमने प्लॉट करना है तो इसका लीनियर फॉर्म बना लेते हैं, तो 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस के एल एंड MB डिवाइडेड बाय के आर के एल एंड MB। R it is 1/k r k l और MB प्लस 1/k r। तो इंटरसेप्ट से हम के आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं 1/MB और दूसरी तरफ 1/r, तो गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका इंटरसेप्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं के आर, ये 1/k r के बराबर है, और स्लोप है 1/k r एंड के एल के। तो जब के आर मालूम हो जाएगा तो फिर हम के एल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन आइसोटोप। इसी तरह इसको रिपोर्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोटोप एज वेल। अगर फ्रेंडलिक में करते हैं, फ्रेंडलिक आइसोटोप्स क्या है? थीटा इज इक्वल टू के पी 1/n। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इट विल बी के सी 1/n। तो इस केस के लिए हमारे पास रेट के आर और थीटा एम बी है, तो ये हम लिख सकते हैं कि के आर और के की बजाय हम इसको के एफ ले लेते हैं, फ्रेंडलिक कांस्टेंट, एंड ये क्या हो जाएगा, और एम बी और 1/n। इसका अगर हम लीनियर फॉर्म ले लेते हैं तो log ऑफ r इज इक्वल टू log के आर एंड के एफ और प्लस 1/n एंड log ऑफ, यानी इन दोनों को अगर हम पहले log लेने से पहले इन दोनों कांस्टेंट को इकट्ठे कर लेते हैं तो r इज इक्वल टू के अपेरेंट एंड एम बी 1/n apparent rate constants. So log of r is equal to log of kap plus 1/n and log of mb. तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। एक तरफ हम लेते हैं log mb और दूसरी तरफ log r, it gives straight line। इसके इंटरसेप्ट से हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है, इस जो रिपोर्ट आपको बता दी गई है ना, एक ये है, और दूसरा है इनडायरेक्ट पाथवे या ER मैकेनिज्म्स, which is just equal to similar to radial mechanisms. The second mechanism two, that is the indirect pathway. Or ER mechanisms. According to these mechanisms, MB react in the fluid phase. MB reacts in fluid phase. तो irradiation produced, यानी सारे मैकेनिज्म में ये बात तो कॉमन ही है ना, irradiations
produces H plus and E in VB and CB. These exciton, hole and electron further react. So first this H is trapped by water, react with water and ultimately produce OH radicals. Ultimately produces OH radicals. Similarly, electron is trapped by adsorb oxygen, react with oxygen, produces superoxide anion radicals and then further react and produce OH radicals. Ultimately produces OH radicals. Then these OH radicals react. OH radicals react with MB and produce the product. ये mechanism है according to AR. तो कैसे होगा? Catalyst is irradiated, it produced H plus and E negative. Then this H plus react with water and produces OH radicals and hydrogen ions. Then the electron react with oxygen and it produces superoxide anion radicals. This superoxide anion radicals react with hydrogen ions and produce another unstable species HO2, and this HO2 further react with oxygen and produces the H2O2, and then H2O2 it produces the OH radicals, and then OH and MB they produce the product. So it is the rate constant steps. तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा? रेट इस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहे हैं, सो रेट विल बी इक्वल टू KR and OH and MB. As इस केस में ये प्रोपोज के reaction catalyst is continuously irradiated, so therefore the hydrogen, the hole and electron they are constant. एक्सिस में हो जाएंगे तो ये कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो OH रेडिकल भी एक्सिस में हो जाएंगे. तो विद रिस्पेक्ट टू OH यहाँ पर NB है, which is the order of reaction with respect to MB. तो जब ONB OH रेडिकल भी एक्सिस में हो जाएंगे so this reaction becomes zero order with respect to OH radicals. या अगर हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं तो फिर इस OH और KR को कंबाइन कर लेते हैं, अपेरेंट रेट कांस्टेंट हमारे पास बन जाएगा. रेट इज इक्वल टू KAP एंड MB पावर n. अब अगर n को हम 1 ले लेते हैं
first order, then for first order reactions we have log mb naught divided by mbt. mb naught is the initial concentrations and mbt is the concentration at different time interval in k1 t. Straight line equations. K1 is the rate constant for first order reactions. इसी तरह अगर n को 2 ले लेते हैं सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करते हैं, यानी उसमें हम नहीं जाते, पहले हम कर चुके हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं कि जब इसको 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए पी एंड एम बी 1। अब रेट को लिख सकते हैं माइनस डी एम बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए पी और एम बी। ऐसे हैं, रीअरेंज करते हैं तो माइनस डी एम बी डिवाइडेड बाई एम बी इज इक्वल टू के ए पी एंड डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं माइनस डी एम बी और एम बी एंड के ए पी एंड डी टी। इंटीग्रेट से फाइनली हमारे पास ये आ जाता है, जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एम बी टी माइनस लॉग ऑफ एम बी टी इज इक्वल टू के ए पी टी एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट z। और फिर जब t इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये एम बी नॉट हो जाएगा और रीअरेंज करके ये इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। इस तरह सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, 1 ओवर एम बी टी एंड के टू टी प्लस 1 ओवर एम बी नॉट, ये सेकंड ऑर्डर के लिए। तो इसके लिए प्लॉट क्या हो जाएगा, एक तरफ लेते हैं t और दूसरी तरफ log एम बी नॉट और एम बी टी, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप बराबर हो जाएगा k के। और इसके लिए क्या हो जाएगा, एक तरफ हम लेते हैं t, k1 स्लोप हो जाएगा और दूसरी तरफ 1 ओवर एम बी टी ले लेते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा 1 ओवर एम बी नॉट और जो स्लोप है वो है k2। तो इस तरह ये दो मैकेनिज्म, these two mechanisms have been proposed for photocatalytic reactions। ये आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट है, उसका लिंक है HT-TP-1389। इस लिंक से आप इस आर्टिकल्स को देख सकते हैं। ये है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में। इसी तरह का एक और रिपोर्ट भी है केमिकल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइनिंग में।
केमिकल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन, ये 2019 का है और वॉल्यूम नंबर है 148 और पेज नंबर है 218 से 226 तक। ये रिसेंट रिपोर्ट्स है फॉर द काइनेटिक्स ऑफ द फोटो कैटालिटिक रिएक्शन। इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया गया है Ag और Al2O3 को, और वो भी Mb के लिए। और इस केस में क्या यूज़ किया है, ZnO NrGO ग्रेफीन ऑक्साइड, और Mb के लिए यूज़ किया गया है। तो ये जो हमने डिस्कस किया है वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, मौजूद है। नेक्स्ट पर हम जो कैरेक्टराइजेशन हमने शुरू की है उसी की तरफ फिर चलेंगे।